हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Yesterday's class we revised. Yes. We are going to do it few more problems based on linear differential equation only. The question is 1 plus y square dx is equal to tan inverse of y minus x into dy. Tan inverse of y minus x into dy. Okay. And now again the question arises, how you know that we have to solve by using linear differential equation only? Means we have to convert into the standard form. What's the steps? Tell me. Tell me the steps. What are the steps we have to follow? Uh, put the standard form What is that standard form? Given. dy by dx Yes. plus Dy dy by dx is plus equal to p of q. y is equal to q. Right. Yes. 1 plus y square dx. In the first step, I am going to write this one as it is. Tan inverse of y minus x into dy. Now look at. We have to get the form. First of all, try to get that form, dy by dx form. So dy by dx form आना मतलब you have to divide both sides with the dx. Here also with the dx. Here also with the dx. Then only you will get a dy by dx form. And now this dx must be cancelled. 1 plus y square is equals to what we are left here? Tan inverse of y minus x into dy by dx. Correct, no? Yes. This multiple terms comes to the denominator. Please give me the answer for each and every step. 1 plus y square as it is. This multiple terms comes to the denominator. That is tan inverse of y minus x Minus x. is the value of dy by dx. Is the value of dy by dx. But if you notice, numerator value is less, denominator value is more. Such a fraction is called improper fraction. So then improper fraction case, we have to take the reciprocal, that is dx by dy. पूरा चेंज हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज हो जाता है, सोल्यूशन चेंज हो जाता है, उल्टा कर दे रहे अपन, रेसिप्रोकल करते हैं, tan इनवर्स ऑफ y minus x and that denominator we have to divide with 1 plus y square. यहीं पे बात करो, मत क्या बाहर, by 1 plus y square. Hello. Yes, Then sir. minus value, if you bring that side, becomes plus. Okay, becomes plus dx by dy, dx by dy, minus value becomes here plus 1 by 1 plus y square into x is equals to, we get here tan inverse of y by 1 plus y square. This one we have to compare with our standard form now.
The standard form is dx by dy plus reverse form में है अपना क्वेश्चन px is equal to normally dy by dx plus p of y आता मगर वेरिएबल चेंज हो जा रहा. So now clearly we can say this is the value of p and this is the value of q. So p and q is confirmed. Then we can go for the second step. That is, we have to find out the integrating factor. Integrating factor Okay. is equals to e power integral. Normally p dx आता मगर रिवर्स फॉर्म में कर रहे हैं तो p dy. This is equals to integral e power. P value is 1 by 1 plus y square dy. This is equals to e to the power of 1 by 1 plus y square is tan inverse of y, because 1 by 1 plus x square is tan inverse of x. That is why y value is tan inverse of y. We got this one is as a integrating factor. Now finally we have to write the solution. The solution is x into integrating factor is equals to integral q into integrating factor of dy plus c. Then put the value, x is x only. Integrating factor we got it as e power tan inverse of y is equals to integral q value is, you can see here it is there, complete value is q value, tan inverse of y by 1 plus y square into integrating factor is e power tan inverse of y into dy. Now most important thing, कभी आपको ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे टर्म्स रिपीटेड हो रहे, so then we can say that it is you have to solve by using substitution method. तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा देखिए. Substitution method means which value is repeated here, tan inverse of y repeated here, so put tan inverse of y is equals to some other variable that is t, और इसको डिफरेंशिएट करें तो then 1 by 1 plus y square dy is equals to dt. Then cross multiply, you will get your dy value is 1 plus y square dt. Now put this values, all values here for this equation number 1. ये पूरे वैल्यूज को यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में. राइट साइड में कुछ भी अपन नहीं कर रहे हैं, तो e पावर tan इनवर्स ऑफ y must be as it is equals to integral. Look at tan inverse of y value is t here, e to the power of tan inverse of y again t by 1 plus y square into dy value is 1 plus y square dt. कल की क्लास अगर आपको याद है तो t इंटू ई पावर टी का फॉर्मूला मैं आपको कल ही दे दिया. क्या होता बोलिए. व्हाट इज द आंसर ऑफ t ई पावर t. रिवाइज नहीं करें, t माइनस 1 ई पावर t प्लस c. दिस इज x इंटू e power tan inverse of, ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है. hey nonsense, get lost. Is equals to t value is what we have assumed, t value is tan inverse of y minus 1 into e to the power of t value is tan inverse of y plus c
और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। टेंड आउट है तो बोलिए। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है और एक कभी कभी इसको पूछता है या इसका रिवर्स फॉर्म में पूछता, वो भी मैं आपको कर रहा हूँ अभी। सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। विल गो टू द नेक्स्ट पेज फॉर दैट क्वेश्चन। हाँ द क्वेश्चन, ये दो में से एक क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Okay. पॉइंट टू पॉइंट भी याद कर सकते हैं आप इसको, मतलब समझिए तो अच्छा रहेगा। सॉल्व 1 + y², 1 + y² प्लस x माइनस e⁻ tan inverse of y, along with this all we have dy by dx, and that is equal to 0. This is the question. Again we have to convert into the standard form and identify pq value, then determine integrating factor and write the solution and finish the problem. Given 1 + y² plus x minus e⁻ tan inverse of y into dy by dx is equal to 0. ओके, Yeah. तो इसको अपन कैसे सॉल्व करना देखें। ये पूरा ब्रैकेट की पूरी वैल्यू इसको उधर लेके वो साइड लेके माइनस कर दे, राइट। तो कैसा होगा, x माइनस e⁻ tan inverse of y into dy by dx this is 1 + y², if you bring that side becomes minus 1/1 + y². तो विल डू वन थिंग, इसमें से भी माइनस कॉमन लेके इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे, ई पावर अल्टीमेटली आई वांट टू राइट दिस इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डर चेंज कर देंगे into dy by dx is equal to minus 1 + y². this minus sign this minus sign will be cancelled. ये जो मल्टीपल टर्म है dy by dx उसको उठा के उधर भिजा दें, then dy by dx becomes 1 + y² Hello. हाँ हेलो यस, Yes. फाइन फाइन क्या है दे दो, जाके खड़े के करा के लेते हो। so 1 + y² divided by e⁻ tan inverse of y minus x। फिर से वो प्रीवियस क्वेश्चन की सिचुएशन आ रही, देखिए यहाँ पर ये वाला, ये कहाँ पर है अपना रिवर्स ऑफ कहाँ पर करे थे, यहाँ पर 1 + y² बाई tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स था। यहाँ पर आ रहा 1 + y² tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ रहा, मतलब इसको फिर से अपन रेसिप्रोकल करना पड़ता, राइट। रेसिप्रोकल करके ही सॉल्व करें तो सॉल्व होता हो। dx by dy is equal to, if you take the reciprocal you will get e⁻
tan inverse of y minus x, दिस डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को अलग से करेंगे डिवाइड, यहाँ पर भी इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर से अलग से डिवाइड करें। अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है थोड़ा सॉल्व करने के बाद। देखिए आप, वही फॉर्म आ रहा, देखिए ई टू द पावर में आ रहा था, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा ई पावर, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस। दोनों को बाद में रिकॉर्डिंग तो देखिए आप, माइनस वी कैन ब्रिंग दैट साइड, वी कैन प्लस dx by dy minus becomes here plus 1 by 1 plus y square into x is equal, उनको भिजाओ जल्दी, नहीं तो नहीं होता, टाइम लग जाता मेरे को। e to the power of tan inverse of y by 1 plus y square. Now let us compare with the standard form. I want to tell you again and again, both of the questions are same, there is a small difference only. dx by dy plus p of x is equal to q we are comparing. This is becomes our q value, this is becomes our p value. अब प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, tan इनवर्स ऑफ y by 1 plus y स्क्वायर आ रहा था, अपने पास e टू द पावर में आ रहा 1 by 1 plus y स्क्वायर, p वैल्यू आ रहा, यहाँ पे भी सेम आ रहा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक सेम है। यहाँ पे जो e आ रहा वो e उसमें नहीं आता, बस उतना ही डिफरेंस आता। So then Okay. p value, q values we got it, integrating factor we can find out. प्रीवियस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e power integral pdx, not pdx, pdy. So like a previous question, we'll get a to the power of integral p value is 1 by 1 plus y square into dy. This is equals to e to the power of 1 by 1 plus y square value is tan inverse of y. So this value is the integrating factor. Now write down the solution and finish the problem. The solution is x into integrating factor is equal to integral q into integrating factor of dy plus c. So then x is x only. Integrating factor we got it as e to the power of tan inverse of y is equal to integral q value. Where is the q value? E power tan inverse of y by 1 plus y square into integrating factor is again e to the power of tan inverse of y into dy. प्रीवियस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करे थे, अभी भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ठहर के लेके आओ, आप जाओ। पुट tan inverse of y is equal to t. When differentiating, we get 1 plus y square dy is equals to dt. Then once cross multiply, we get dy is equals to 1 plus y square dt. If you put all these values here in equation number 1, what happened to this equation number 1? This part we are not going to change, e power tan inverse of y को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, is equal to integral as it is, it is e power t into e power t by 1 plus y square into dy value is 1 plus y square into dt. This 1 plus y square, 1 plus y square cancel, x into e power tan inverse of y
is equals to e power t together becomes e power 2t dt, and then integration of e power 2t is e power 2t by 2. This is equal to e power 2t by 2 and then constant. फाइनली सिर्फ t की वैल्यू को रिप्लेस करें, e पावर tan इनवर्स ऑफ y is equal to 1 by 2 as it is, e1 e as it is, 2 as it is. T value is tan inverse of y, which is the end of this problem, and plus finish. These two questions are very very important, and yesterday also we have done some questions. ये पूरे मिला के क्या हो जाता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आपको बर्नौली करने के लिए भी काम आता। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आए तभी आप बर्नौली कर सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते। एक बार ये स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है एक बार फिर से उसको अच्छे से देख लीजिए। Okay. और कल की क्लास जो Constant. होंगी, कल की क्लास के लिए आपको फिर से लीनियर काम आता है। आपका सिलेबस के हिसाब से लीनियर, बर्नौली, उसके बाद लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन करने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाता। Okay. कॉलेज में कौन सा यूनिट चल अभी समर हॉलीडेज चल रहा सर। रहा है? अभी चल रहा है बिफोर समर हॉलीडेज, बिफोर फोर्थ। टिल फोर्थ यूनिट यू केम। या इसका मतलब मैट्रिसेस हो गया है। यस मैट्रिसेस हो गया। थर्ड वाला सर अभी नहीं करा है। अपन जो कर रहे हैं वो कौन सा यूनिट है? ठीक। डोंट नो, यही थर्ड यूनिट करा रहा हूँ मैं। नहीं सर, थर्ड यूनिट आप कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ है ना? जी। ठीक, ठीक, ठीक है। अभी आप उसमें दो तीन टॉपिक्स और है, बर्नौली है, रिकॉर्टी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ। उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाता, फिर हायर ऑर्डर करके मैट्रिसेस करा देता आपको, खत्म हो जाता। ठीक है ना? इसको अच्छे से ओके। पढ़ लीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में अपने को फिर से इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ऐसा भी आता है एग्जाम में। प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन वी कैन गो फॉर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। ठीक है, तो मैं इसको एंड अप कर दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आपके स्टेमिना के हिसाब से, कुछ ज़्यादा करे तो भूल जाते हैं आप।